plan had opened did not really work, so no trades had open. Again, still looking for a cap fill here, and then looking will see if I get buying opportunities. So I think so. I closing in green. Wanted to take this also in the afternoon, but looking at the stunts Nifty has been doing after 2, I was didn't really want to give up my profits. So what did I do? So if you look at this was the last volume which came in Nifty. The high of the candle is 19475. As soon as we got a closing after 10, that is the 1 hour candle above 19475. I went for scalp buying, came out very quickly, like 25 points. I did a put sell, and again tomorrow I'll if this any 1 hour candle closes below this, I'll look for selling opportunities, because I think this level is really important, because that was the last volume we saw. Let's see. Yeah, so this above system trade was above sell below 115. Above 115 it blasted. I did not give this trade because I wanted some correction. Can't, I don't know, I don't really like the structure, but anyways, thank you. तो प्लान ये था कि ये गैप फिल करेगा तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा, अगर नहीं हुआ वो तो अब कल भी वही प्लान है. सिस्टम ट्रेड मैंने दिया था 115 के नीचे सेल करूँगा. ये 115 के ऊपर बाय था, लेकिन मुझे नहीं करना था क्योंकि मैं सुबह प्रॉफिट में था और मुझे पता था कि ये स्टंट तो मारेगा ही. तो ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 50 पॉइंट का कैंडल बनाया है इसने, 215 वाला. 550 से 500 आया वापस, और वापस 550 गया. इसलिए अभी थोड़ा जब तक करेक्शन नहीं आता तब तक मैं और एग्रेसिव नहीं होना चाहता. सुबह क्या ट्रेड था, एक तो सिस्टम ट्रेड आया था बाय. ऊपर से अगर आप देखें तो लास्ट जो वॉल्यूम आए थे, जो सेल वॉल्यूम्स थे, वो थे 475 के. जो कैंडल ने सेल इनिशिएट किया था उसका हाई था 19,475, और 10 बजे के बाद 19,475 के ऊपर क्लोज हुआ वो 1 घंटे का कैंडल. तो आज तो ऑप्शन सेलिंग किया, प्रीमियम्स अच्छे थे उस टाइम पे, और स्कैल्प करके निकल गया मैं. इसलिए मैंने सेकंड हाफ का ट्रेड लिया नहीं तो मैं रिवर्स कर सकता था. 115 के ऊपर 115 के नीचे सेल दिया था मैंने, 115 के ऊपर बाय कर सकता था मैं. कल जैसे मैंने बोला देखूंगा, अगर गैप फिल हुआ तो कुछ करूँगा. थैंक यू.